guest is ready. Seema Malik ji is ready, and we must apologize to her that this show took a slightly longer time. Seema ji, namaskar. Namaskar, namaskar. How are you, ma'am? Seema ji की आवाज नहीं आ रही मुझे. Can somebody check, please? I can't hear Seema ji. Would you say something, ma'am? Hello? Yeah, we can hear you now. Yes, we can hear you now. जी, apologies, ma'am. My apologies. My apologies. गणेश खानकर साहब के साथ एस्ट्रोलॉजी की बात शुरू हो गई तो जरा लंबी हो गई. अब क्या करें? जी, कोई बात नहीं. I was listening to actually I was listening very carefully. जी, to your previous show. वो क्या है कि अब वो क्या है कि सूर्य सिद्धांत की जब बात शुरू हो जाती है तो फिर उसमें that is my subject of research, so उसमें काफी लंबा हो जाता है. लेकिन अभी क्या है मैम, ये बताएं कि इज द गवर्नमेंट सीरियस? आई मीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर बात करें, क्या महाराष्ट्र सरकार गंभीर है मराठा रिजर्वेशन के साथ? मतलब आधे सीरियस अबाउट गिविंग मराठा रिजर्वेशन, और डू यू थिंक दिस इज जस्ट अनदर लॉलीपॉप टू द मराठास? देखिए, you also know and we also know that they just a minute. जी प्लीज. आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, अच्छी तरह. जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए द काइंड ऑफ उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है उनसे, आप लोग जानते ही हैं, तो कोई भी इसको लॉलीपॉप ही कहेगा. एंड आई थिंक वो भी रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को, एंड दे आल्सो वांट कि मतलब how can they something you are asking is difficult for them to show those papers, and तो अगर आप मेरे को कहेंगे तो मैं तो लॉलीपॉप ही कहूंगी जी. और एक और चीज आई थिंक उनको भी ऐसा ही लग रहा है जी. दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. द अदर थिंग आल्सो आई मस्ट टेल यू, देयर वर आई थिंक 7 बाई इलेक्शंस टुडे. आज 7 बाई इलेक्शन थी जी, जिसमें 4 हम जीत गए जी. 7 में से 4 इंडिया जीता है और 3 जो है वो इंडिया जीती है, जिसमें से 2 त्रिपुरा की सीट है और एक उत्तरांचल की सीट है, एक उत्तराखंड की. यस. और वो जो घोसी में उत्तर प्रदेश में जो आप जीते हैं, दैट इज स्पेक्टेक्युलर. वो दारा सिंह चौहान साहब समाजवादी पार्टी से डिफेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी में आए और पिछली मर्तबा वो 22,000 वोटों से जीते थे, इस बार वो 42,000 वोटों से हारे हैं. तो आप यू कैन सी द मूड ऑफ द पब्लिक एक्चुअली. यस, जनता का मूड दिखाता है. यूपी में जो वो कहते हैं ना कि हमारी 80 सीटें आएंगी पूरी, तो अब आप देख लो, अब शुरुआत हो चुकी है. एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, नथिंग एल्स. एंड आप देखिएगा अभी क्या होता है. एंड पीपल आर रियली आई थिंक अपसेट विद दीज गाइस. तो ये यूपी जैसी जगह में, और एक बंदा जो बीजेपी से, आपने खुद ही बोला वो चीज़, तो मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं क्या मूड है पब्लिक का. और दो लोग बड़े उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमने, और वेस्ट बंगाल में तो हमने वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में अगर हमने नहीं, वेस्ट बंगाल में ये सीट और मिल गई मैम. ये सीट जो थी ये बीजेपी के पास थी, वो अब टीएमसी ने जीत ली. जी जी, वही तो मैं कह रही हूँ ना. यू सी इन यूपी, प्लेसेस लाइक यूपी एंड पश्चिम बंगाल, उनका क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग हम सब जानते हैं. उसमें ये सीट्स मिलना है, दिस इज समथिंग क्या इंडिकेट करता है? ये बिल्कुल एक क्लियर सी बात है, जो कि ये लोग शायद मानने के लिए तैयार नहीं है. एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप कि चलो हमने त्रिपुरा में, इसकी जगह हमें त्रिपुरा में एक और मिल गई है. बट यू कैन सी द मूड ऑफ द पीपल. It is really changing. सीमा जी, we are happy. We are very happy with this. Yes. सीमा जी, the G20 के माध्यम से बीजेपी says भारत विश्व गुरु की ओर, towards भारत विश्व गुरु. मोदी जी स्लोगन, one earth, one family, one future. This is the BJP. They're saying we are becoming a major global player. और फिर उनका कहना कि हम वसुदैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं. But the Congress-led opposition believes in Kutumbakam. They say we are talking about public welfare. The Congress talks about family welfare. When they talk about Congress, it includes Sharad Pawar ji, family welfare. How are you going to differ with that? How are you going to differ with that, Seema Malik? See, these things have become so distinct. They talk about the inclusive development. They talk about that. Action oriented plan, and they talk about the last person in the line, the very last person in the line. But the reality is totally different. They are really not bothered about this the last person in the line. The kind of politics they are doing, you just see that they are really bothered for their 2 friends,
the total wealth of this country is the 140% of the total wealth of this country is with the 1% people only. They talk about economy, but they will never talk about the gap between the rich and poor. They will never talk about the per capita income of the country. They will never talk about the purchasing power of the country. तो देखिए, मैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूँगी कि हमें विश्व गुरु नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका दिल जो है अपने देश के लोगों के लिए धड़कता हो। केवल एक बात ये करना कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए हम सोचते हैं, पर वो उनके लिए कभी नहीं सोचते। केवल 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज बांट देने से कुछ नहीं होगा। और अभी आप जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, शायद उस समय तो ये बिल्कुल भी 5 साल तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, बिकॉज टू ऑल द वेलफेयर स्कीम्स दे गिव द नेम ऑफ रेवड़ी। तो आप देखिए, ये एक कहने की बात अलग है और विश्व गुरु बन गए। एंड व्हाट इज दिस विश्व गुरु? तो सीमा मलिक जी, ये भारत जो बना दिया है अभी, तो नाउ वी आर नो लॉन्गर इंडिया, तो हम लोग अब इंडिया नहीं है, हम भारत है। See what kind of, अभी भी आप G20 कर रहे हैं, you should concentrate on this and the kind of, आप ये इंडिया नहीं है, इंडिया एंड भारत का बहस आपने छेड़ रखा है। What is this? You see, इतने डर गए आप, इतना आपको you are so this thing, you know, कि आप इतने बौखला गए कि now टेलिंग कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया हटा देंगे एंड ये कर देंगे अपना स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, नाचो इंडिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो फ्रॉम कितनी जगहों से नाम हटाएंगे मुझे पता नहीं। एंड दिस इज समथिंग वेरी, लेकिन भारत तो पहले से ही थे, उसमें नई बात क्या? आई डोंट नो व्हाट टू से दैट व्हाट काइंड ऑफ एंड यू सी। बट सीमा मलिक जी, we were always भारत। We come for the debate of India and Bharat, India versus Bharat. So what is this? But we were always भारत। When have we not been भारत? India, that is भारत। हमारे पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर भी भारत लिखा होता है। इंडिया भारत हिंदुस्तान में क्या फर्क है, शायद इनको ही पता होगा, हमको तो पता नहीं। I think we... But do you think it will work? Do you think it will work with the people? Do you think it will work with the common people? It will not. अभी आप देखिए, आप कहीं भी आप कोई सर्वे करिए ऑन द ग्राउंड एंड यू आस्क पीपल रैंडमली, आप उनसे पूछिए तो लोग चट चुके हैं इन चीजों से। भाई यूपी में तो काम नहीं किया। अब आप टीवी लगाओ, पीपल आर गोइंग टू, पीपल वांट टू सी द एंटरटेनमेंट चैनल की कौन देखेगा न्यूज़? रोज जब लगाओ डिबेट हो रहा है इंडिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यू ब्रॉट द कर्टन डाउन ऑन अस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें कोई देखेगा नहीं, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट देखेंगे। नहीं, not to you, I am telling, not to you. You see the kind of debates are going on there. You know, there are no debates. So 3 days, nobody is talking about other things. People are talking about India and not to you. You are talking on various topics, but sometimes there is a debate only on this. लेकिन उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर तो काम नहीं किया है। वेस्ट बंगाल में भी और केरल में भी काम नहीं किया है, वहाँ तो आप नहीं करेगा सर ये काम जी, बिकॉज लोग परेशान हैं इस समय। वाकई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन और ये सब चीजें लोगों की समस्याएं हैं। फार्मर्स को आप देखिए क्या हाल है उनका। अभी ये रिजर्वेशन के लिए ऐसे डंडे मारे हैं वहाँ महाराष्ट्र में, तो लोगों की अपनी परेशानियां हैं। दे आर रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेम्स, बट सरकार इज वेरी फॉन्ड ऑफ चेंजिंग द नेम्स, यू नो। सो दे विल गो टू द एक्सटेंट कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर देंगे नाम, तो भी करो कुछ काम। अगर हम लोग इतने ज्यादा, हमारे पास कोई समस्या नहीं है अगर हमारे देश में, तो करिए आप भाई। प्रदीप जी, यू नो सीमा मलिक जी, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि रिजर्वेशंस अगर हम मराठास को दे रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द ओबीसी कोटा, ओबीसी कोटा विल नॉट बी अफेक्टेड। दैट वाज व्हाट एकनाथ शिंदे जी का। तो हाउ डू यू सी हाउ द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? शरद पवार साहब खुद गए थे वहां पर, जलना में लोगों से मिले। व्हाट इज द फीलिंग? Is the government, will the government be able to fulfill जो 4 दिन का टाइम दिया था कुंभी को, आप सर्टिफिकेट दे देना, तो हाउ डू यू सी रिजर्वेशन का? तो is the government capable of finding a solution here, सीमा मलिक जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये द काइंड ऑफ दे कुंभीज के लिए भी वही बात, दे आर आस्किंग फॉर द पेपर्स बेसिकली, दैट निजाम रिव्यू एंड ऑल्सो I think it is not practically possible, and जो वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर you really include them, then तो they again there will be some chaos like पहले होते रहते हैं लोग, क्योंकि because they announce anything without thinking about that. So again the people, लोग परेशान होते रहेंगे कि किसके पास है सर्टिफिकेट, किसके पास नहीं है। तो I think they are very genuine, उनका डिमांड है, and देखना चाहिए उनको।
सीमा जी, there are many states जिनके पास 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है ना. We cannot whether it is Tamil Nadu or some In or Tamil Nadu, Chhattisgarh, madam. In they are Tamil having Nadu. 69% of reservations. So But that was before this 50% rule came into force. yes, That was before yes, that. those things are there, but they will have to think, they will have to find out some strategy. Just telling one day, you bring those certificates, and so that is, I don't think it is a practical solution for this. तो ये GR जो निकाल रहे हैं मैडम अभी, the GR that they are bringing out, where they say the Kunbis of Marathwada will now be given, or who are considered Marathas, will now be given reservation certificates. What But they is will that? have to prove that, they are asking for those papers. I don't think लोगों के पास होंगे, and maybe some people have, some don't have. So that will be. So what they want is that everybody should get that. But aren't they paper. taking a very big risk? Isn't the government taking a very big risk? Because all the people whom they have mollified for the moment by saying that they are bringing out a Yes. GR, the GR should be out on Monday. Now, Yeah, that's what so don't you think all these people will get angrier at the fact that they have been betrayed again? सीमा they मलिक, are angry actually. They are angry. जो अभी continue कर ही रहे ना अपना जो आंदोलन है उसको continue कर रहे हैं. They fast and आंदोलन and everything. So they are still angry. They are waiting for that GR. They want that change, that it should not be conditional or something. So let's see. प्रदीप जी, What how they will the do, GR and help? I'm I still can't telling you, figure this out. is the habit of this government to announce anything without thinking, and Because the it law doesn't comes- permit. Right. I think Mr. Raj Thackeray was the only man who actually said it very frankly. Hey, listen, you're being made fools out of, because the law does not permit this unless and until there is a constitutional amendment at the center bringing the amount of reservation that you can give above 50%. This GR Yes, means sir. nothing. They said they will include them in OBCs. Include them in OBCs. But the OBCs are already Yes, reacting. yes. प्रदीप जी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल, छगन भुजबल साहब ने बोला है कि ये बिल्कुल. I mean, They are there's a- telling like this. I'm telling that the government is telling like this. They have told. yes. But we were discussing same thing. Eknath Shinde is saying that I will see that the quota of the OBCs are not affected by this particular change and these. So it's going to be a tough walk. It's not going to be so easy. How Eknath Shinde is going to see that they get reservations, but the OBC quota is not affected. A challenge hoga. Chhagan Bhujbal ji already said that he's going to be a big problem. Then we had the head of the OBC Mahasangh saying that it will be a major problem. We'll all revolt if anything of this sort happens. So it's going to be a tightrope walk. Seema Malik ji. Yes, it is there, but they have announced. You should ask them actually that what they feel and what they want to do basically. So, They've asked their ministers not to talk to the press actually, about they this behave particular very subject. bad. The main thing is this कि उन्होंने behave बहुत खराब करा. देखो आप the way लाठी चार्ज करा and this things पहले भी था ही मारा था कि reservation के लिए. It is not a कोई आज का विषय नहीं है, पर इस तरह से behave करना, लोगों को लाठियों से मारना, and वो सब जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और मतलब क्या कह सकते हैं उसके लिए हम. And they should have not done it actually, not just to cover up. वो कुछ भी बोल रहे हैं without thinking anything. I think better you should ask them this thing and how they are going to do it. This is a Actually, they could have question taken for myself. Mr. This is Sharad this is- Pawar's advice. No, They could have abhi- easily called him up. Otherwise, Mr. Ajit Dada Pawar keeps going to Sharad Pawar's house, to touch his feet and so on. He could have easily asked for his advice on this particular subject. I don't know why he's not doing it. That is a totally different issue, and we really don't know that he has taken the advice or not. I don't think so, but मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना. देखिए अब वो एक उनसे मिलने जाना और एक तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात बोली है कि डोंट मिक्स अप द पॉलिटिक्स एंड द फैमिली अफेयर. सो वो किसी भी फैमिली उससे जा सकते हैं. तो महाराष्ट्र में क्या होने वाला है सीमा मलिक जी? जो आपने देखा अभी जो 7 बाई इलेक्शन हुई, अगर त्रिपुरा को हम अलग रख दें, बिकॉज त्रिपुरा पर से डज नॉट अफेक्ट द नेशनल मेन स्ट्रीम, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब अभी महाराष्ट्र में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी अगर महाराष्ट्र में एनडीए जीतेगा? मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बताती हूँ. बहुत
नेगेटिव वेव है इस गवर्नमेंट के लिए, वेदर फार्मर्स के साथ जो हो रहा है या लोगों के साथ जो हो रहा है, द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन वो करते हैं। कुछ भी एक सेंटेंस आया उसको उठा के एवरी टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, एंड किसी को भी ये चिंता नहीं है कि लोगों के लिए क्या करना है। तो लोग अब जिस तरह से इन लोगों ने बिहेव किया है, तो एक सिंपैथी है महाराष्ट्र में। आई एम वेरी श्योर दैट वी इज गोइंग टू कम, आप देखिएगा क्योंकि लोगों को सीमा मलिक जी, आज राहुल गांधी जी ब्रसेल्स बेल्जियम में इशू उठाए कि लोकतंत्र खतरे में। He says democracy is in danger and the Congress and its allies will fight together to see that the democracy thrives, लोकतंत्र बचेगा। He said the institutions पे अटैक हो रहा है by the BJP government and he will go ahead to save freedom and these institutions। आगे जाके वो कहता है कि I am with Gandhi's India, Mahatma Gandhi's India, not Godse's India। Now, whenever he pitches this particular language, Godse, Savarkar, महाराष्ट्र के एमवीए में वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। लास्ट टाइम मैं आपको एक बात बोलती ना कि अगर मेरी पार्टी के बारे में आप पूछते हो तो जिन भी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम फाइटिंग में, वेदर इट सावरकर जी और गांधी और पटेल और एनीबॉडी, वी रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट ऑफ कोर्स महात्मा गांधी वाज महात्मा गांधी, दे आल्सो हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि जब उनका कुछ when they need it in the global level, then we talk about महात्मा गांधी, and नहीं तो वो कुछ भी like nobody will appreciate having a क्या बोल सकते हैं जिन्हें जो the person who killed someone, उसके बारे में अब हम क्या बोल सकते हैं अगर उनके बारे में कुछ बात करनी है तो जाती। और मैं उस पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट मैं ये कहूँगी कि देखिए जो भी है एज अ पार्टी वी रिस्पेक्ट ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूशन है, छोटा भी कंट्रीब्यूशन है, ये लोग तो बहुत बड़े लीडर्स रहे हैं, वेदर टू सावरकर जी और गांधी जी और सरदार पटेल जी, शहीद भगत सिंह, एनीबॉडी, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। सो दैट इज माय पार्टी स्टैंड, आई कैन टेल यू दिस ओनली। Seema Malik ji, among the development activities that Modi Sarkar talks about very proudly, they say Jal Jeevan Mission, Modi ji in the center and Devendra Fadnavis ji in Maharashtra, bola Jal Jeevan Mission has been a success, and the BJP statistics are right from 1st January 23 say they are installing 87,500 tap connections, पानी का कनेक्शंस 87,500 टैप कनेक्शंस पर डे। सीमा मलिक जी, ऐसा टॉयलेट बनाया जो वहां पर पानी नहीं है, सबको ही बताइए ये बात। तो बहुत एक हिंदी में आपको बिल्कुल एक लाइन में बता रही हूँ, सबको पता है जो इतने टॉयलेट्स बने जिसका बहुत ज्यादा बखान होता है, उसमें वहां पर पानी नहीं आते हैं। तो अब ठीक है करा, अगर मैं ये नहीं कहती कि आपने कुछ नहीं करा, ये आई जस्ट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही थी कि हाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है करा है तो अच्छी बात है। given a water connection to them that way, but this every but the real picture जो है वो भी सब लोग जानते हैं that मतलब देखिए इनकी बातें में और इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये सारा इंडिया जो है जानता है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि what they claim and what they have done is there is a lot of difference between the two। they talk about the, जैसे मैंने बोला आप देखिए इकोनॉमी के लिए इतना we are the fifth largest economy and we are ये थर्ड हम होने वाले हैं, हमें भी अच्छा लगता है, we also feel very proud when we listen to all this, but they will never talk about, but ये जो आज जो देश की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पे कभी बात नहीं करना चाहते। और ये मैम जो इन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी दी है, 200 रुपए कम किया है कीमत जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की, यानी 1150 से अब वो 950 की हो गई है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आप देखो ना, ये तो आप क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ, एक 400-500 रुपए की चीज जो देख रहे हैं आप राजस्थान में दे ही रहे 500 रुपए का सिलेंडर, if they want they can also give, but आप उसको बढ़ा के अब उसको आप 200 रुपए कम कर देते हो, तो मेरे ख्याल से जो एक बहुत साधारण सा व्यक्ति है ना जिसको बोलते हैं उसको भी ये बात समझ में आती है। हम लोग को तो खैर आती ही है, पर आप देखिए किसी को भी ये बात समझ में आएगी कि इतना दाम बढ़ा के आप 200 कम, सेम थिंग यू डू विद द पेट्रोल एंड डीजल एंड एवरीथिंग, इतना बढ़ा के आप थोड़ा सा कम कर देते हो, द सेम थिंग यू डिड विद द टमाटर आल्सो। तो ये सब बातें लोगों ने देखी हैं और लोगों को समझ में आती हैं। आज कहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया है आप देखिए,
वो भी मैं हम डेटर्स की बात नहीं करते, क्योंकि डेटर्स में इतना उलझा देते लोगों को, एक आंकड़े और उनकी जो सांत्वना होती है उसमें इतना उलझा देते कि पब्लिक उसमें ही ये सोचती है कि शायद कुछ होने वाला है। पर अब इतनी निराशा हो चुकी है, लोगों को पता है, उनको भी पता है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। दिस देखिए इज जस्ट मेरा ये कहना है सीमा मलिक जी, इट्स वेरी स्ट्रेंज इफ से द गवर्नमेंट इन राजस्थान can give a gas cylinder at about 580 rupees. If in Chhattisgarh it can be sold for 550. If in Karnataka also they can give it, I think it's for 600 if I'm not mistaken. These are Congress ruled states. So what yes. prevents other states from doing the same thing? They can easily do the same thing, isn't it? They can do. That's what I'm telling. This is just a इसको क्या बोलेंगे, गिमिक भी क्या बोलो, आई डोंट नो। शायद कोई भी आदमी इस बात को समझ जाएगा कि आप इतना बढ़ा के, नो यू टेलिंग कि भी हमने 200 रुपए कम कर रहे हैं, सब्सिडी एंड ये व्हाट नॉट, आई डोंट नो। सबको समझ आती है ये बातें। आज लोग इतने मूर्ख नहीं है इस देश के अभी। दे आर वेरी मच अवेयर एंड दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड वो झेल रहे हैं कि आज लोगों के पास कोई बचत नहीं है। आप कहने के लिए आप लोगों को आप बोलोगे उनका हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि उनकी बचत जो है ना, जिससे जो लोग एक बचत करते थे कि हाँ भाई हम शादी करनी है, हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए, वैसा कुछ भी उनके पास नहीं है। बचत कितना कम हो गया है आप देखिए, अगर आप उनके डेटाज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी कम हो चुकी है लोगों की। लोग वाकई परेशान है लोगों की। मैं आज यंगस्टर्स की शादियां नहीं हो रही बिकॉज दे डोंट हैव एनी जॉब। तो ये सब चीजें जो है बड़ी एक एक्यूट क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट की। लेकिन सीमा मलिक जी जो आप बोल रही हैं वो तकरीबन उसके साथ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं हो सकती है, कोई विवादास्पद बात आप नहीं बोल रही। तो ये बातें क्या आज की तारीख में जो एनडीए सरकार है केंद्र में और जो सरकार महाराष्ट्र में है, क्या उनको मालूम नहीं है? अगर आपको मालूम है, हमें मालूम है, तो क्या उनको मालूम नहीं है? उनको ये मालूम नहीं है कि जब वो चुनाव के लिए जाएंगे हारने वाले हैं। they are just making fool of the people, like talking like हम विश्व गुरु हो गए हैं, हम अपनी पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। अरे भाई थोड़े लोगों के जो 1% people are having the 40% of the wealth, and बाकी लोगों में गैप बढ़ता ही चलता चला जा रहा है रिच एंड पुअर में। उसमें आप कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। यू विल नॉट टॉक अबाउट योर, आप इंस्टीट्यूशनल करप्शन तो है ही है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो कोई गलत तो है नहीं। द वे द मिसयूज हो रहे हैं आज इंस्टीट्यूशंस का, तो उसको ये बात सब हर चीज में आपको ऑब्जेक्शन है। वेदर इट वाज, अभी देखिए ईडी के डायरेक्टर की वो जो भी अवधि वगैरह कम होने थे उसमें देखिए क्या क्या उन्होंने हर चीज में ये है कि अपना भी बिल अबाउट एनीथिंग एंड अपने आप ही कोई अभी पार्लियामेंट सेशन बुलाया है हम लोगों को। नोबडी नोज कि व्हाट विल बी, व्हाट इज द एजेंडा लाइक। दे आर बोलते जब टाइम आएगा बता देंगे, कोई सोच रहा है ये, कोई सोच रहा है वो है। तो दे डोंट हैव एनी ब्लूप्रिंट फॉर एनीथिंग। यू सी किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास कि हमें क्या करना है, बस केवल बातें। ना सीमा मलिक जी जिसको कहते हैं ना जुमलों की सरकार, दैट इज देयर। अभी आप देखिए मैं आपका शो सुन रही थी पहले जाके, ये टॉकिंग अबाउट ये है, वहां लिखा है इतने सालों के बाद क्या होगा, अभी ये है हमारे इसमें ये लिखा है वो लिखा है। भैया खाना नहीं खा पा रहे लोग, उसकी बात तो कर लो थोड़ी। ये है नहीं वो बात नहीं करते, आप सुन लो उनसे, वो बात नहीं करेंगे। प्राइस की बात कोई नहीं करता। है अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है, अरे भैया अभी क्या हो रहा है उसकी भी कोई बात कोई करेगा क्या? कोई है इस देश में जो उसकी बात करेगा? अभी लोगों की जो समस्याएं हैं सीमा मलिक जी, सीमा मलिक जी सो हाई, यू नो G20 से आप बिल्कुल विश्व गुरु हो गए, पता नहीं क्या क्या है। Now, what is this Vishwa Guru? I don't know what is this Vishwa Guru. No, I want to know what is the meaning of Vishwa Guru. If you have no idea, please let me know. I want to know what Sanjay Raut ने आज जो स्टेटमेंट दिया। संजय राउत he warned जूनियर स्टालिन, डीएमके के जो स्टालिन जूनियर है उनको कहा कि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस देश में 90 करोड़ हिंदूज है। संजय राउत जी का कहना है you can't hurt the sentiments of Hindus and you cannot have an agenda that hurt the sentiments of Hindus. संजय राउत जी का कहना है। Now when संजय राउत says something, मेरा ये कहना है और मेरी पार्टी का भी ये कहना है कि we should not hurt the sentiment of anybody, whether we are 90 करोड़ or we are 1 करोड़ or 1%. We should not hurt the sentiment of anybody that way. So हम लोग सब, हमें अपनी पार्टी का बोल सकते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम किसी के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें हम कुछ भी बोलते हैं, और ना तो हमारे लीडर्स कभी बोलते हैं और ना हम लोग कभी बोलते हैं।
तो इनको क्या जरूरत पड़ गई? आपको क्या लग रहा है कि उदयनिधि स्टालिन साहब को ये बोलने की अभी, मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया पार्टनर्स आर एम्बेरेस्ड बाय इट, ये क्या जरूरत पड़ गई इनको बोलने की अभी? आई थॉट दिस सब्जेक्ट वाज ओवर एंड डन विद आफ्टर द डेथ ऑफ पेरियार। मतलब ये करने की या अभी इस एरा में 21वीं सदी में बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आया? व्हाई डिड ही हैव टू से दिस? I think he is the one who can answer it better, and I think उन्होंने करा भी है आंसर जो भी है। Better I can only say that we respect all the religions, and which we believe that we should not have the sentiment of anything Right. like that. Right. Thank you so That's much. what I have learned from my leaders, that we should Absolutely. Thank you so Thank you. much. Thank you Thank very you, sir. much. Thank Seema you. Malik Thank ji, you, always sir. a pleasure Thank you. talking to you. Thank Love the you, way you sir. talk. I love the way you are so candid, so frank, so truthful. Thank you, you sir. don't Thank lie. you so much. You do, unlike all Thank you other much. political spokespersons, you don't lie on television, which is fantastic. And you so and much. you preempt the question before it is asked. Really I wonderful. really don't prepare anything for anything. But really wonderful, man. I speak with my heart actually, जो मुझे Yes, लगता है वो yes, मैं you do. बोलती हूँ, that's- आप बिल्कुल Thank दिल you. से बोलती हैं और इसके लिए आपके लिए हमारा बहुत आदर है और बहुत सम्मान है। Thank you, sir. नमस्कार। Same here. Thank you. Thank you very much. Right, that's just about it as far as we are concerned. We have talked about just about everything, Pradeep ji. Yes, yes. Today it was complete. I mean, Yeah. we had discussions on Yeah. all aspects, and we got very fruitful answers on all questions. Except for the fact that as far as Mr. Ganesh Khatkar was concerned, I really wanted to talk to him a bit more about Astrology. No, not A special session on astrology. No, not about astrology. A kind of inconvenience which has been caused to the people of Delhi because of G20. Joe Biden has come over here. Just about the whole of Delhi is under lockdown. Nobody can come out. Nobody knows what's happening, and so on and so forth. It's a bit of a problem, really. Especially the New Delhi area and all the other areas where these guys are going to be there. So it's lovely for all of us, who are not in Delhi right now, to see that G20 is happening over there, to see that all world leaders are coming in. But flights are disrupted, trains are disrupted, just about everything, all the traffic over there is disrupted. You can't go unless and until you have proper identification. Only residents of certain areas are allowed to go in those areas. So that never happens anywhere else in the Delhi has world. become an island in itself now. Yes, but Pradeep ji, all I'm saying is we will be a developed country at the time when nothing of this happens. Like for example, when you go to Washington DC, when our Prime Minister goes to Washington DC, or when the United Nations is in session in New York does not come to a standstill. So all I'm saying is we have to have that kind of confidence in ourselves that nothing untoward is going to happen. Even if it is the President of the United States, even if it is the Prime Minister of UK, the Prime Minister of Canada, and just about everybody else who's coming in, and the President of France, and so on and so forth. So what? My point is, we need to do what we need to do. That's it. Mr. Modi, when he came to power, when he removed the red beacons of everybody, Yes. he says everybody is a normal At an man, equal common level. man. Yes, everybody is the same. That didn't go for Joe Biden. Yes. Right. That So, does not apply to Joe probably Biden. here, the beacons only for the chief minister or probably the prime minister. Rest जो एक रेड लाल बत्ती का जो कल्चर था वो पूरा मोदी जी ने वो समाप्त साहब लाल बत्ती सिर्फ जो बाइडन, ऋषि सुनाक, Yes, अपने he stopped. Trudeau His साहब- intentions were clear. His intentions were that everybody जी। is same before the law, equal before the सर law. ऐसा है, हर एक के इरादे बहुत नेक होते हैं जब भी वो हुकूमत में आता है। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि मैं ऑफिशियल रेजिडेंस इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऑफिशियल कार इस्तेमाल नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बट एनीवे, G20, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द वर्ल्ड लीडर्स आर हियर एंड वी आर वेरी हैप्पी इट्स नॉट इन मुंबई। You know what? I am really and truly happy that we don't have to suffer all those security arrangements which are on in Delhi at the moment. So I am really and truly happy. I am happy and proud of the fact that G20 is happening, and I am also very proud of the fact that it is happening in Delhi, not in Mumbai. I hope it doesn't happen in Mumbai. That's it. Now let's take a look at, we already had a huge disruption of traffic today, by the way, because of the rain. The rains have come back, and as you were saying, look at the timing of the rains. बिल्कुल दही हांडी के वक्त बारिश भी आ गई। जैसे ही जन्म हुआ श्री कृष्ण का, बारिश भी साथ लेकर के आ गए।
And we were actually starving for rains for quite Yes, some time. we At were. least, more than nearly a month Yes. before the rains have really vanished from From- Mumbai from- skylines. But thank God they're back. Thank God the rain is back, and thank God that all the lakes will now, I hope, be full up as they are usually, because right now they're up to 90%. I think we need another 10% of rains. I think we will have rains up till Dasera. ज़्यादातर नवरात्रि के वक्त भी रेंज, गणपति की नवरात्रि के वक्त भी बारिश होती है और दशहरा तक चलती है, जहाँ तक मुझे याद है. I hope it will happen again this year. In the meantime, please do keep sending in your comments. आप अपने comments ज़रूर भेजें. And if you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ी कृपा होगी, आप सब्सक्राइब कर लें. This channel depends entirely on you and your response. All right, let's take a look at some of the responses which have come in. Dhananjay Junakar sahab, if your two eyeballs working divergently, you cannot focus and see. Congress is so blind vision. Okay, this is what Mukund Rajan says. Mukund Rajan. 8961. He's called Mr. Stalin Jr. one eyeball. All right. Vinay Yadav साहब लिखते हैं, individual views are okay, but how can people say about eradication, about a peaceful group? Madmen like him should be held responsible for such remarks. That's what he says. This is all about Stalin Jr. Right? Can we move on, please? Sena, corrupt mind, selfish leader. Which Sena is he talking about? I mean 7633. Which Sena? ये बहुत बड़ा दिक्कत है. एनसीपी कौन सा एनसीपी, सेना कौन सा सेना? Yeah, कौन सी सेना है? वंदे मातरम, जय सनातन धर्म. User JW7GE6ZZ8R. Right, we had a few other comments also. Quite a few people have written in. Why, I don't know why we haven't used them. We'll use them tomorrow. Right, thank you very much for joining us, and thank you very much for watching us. We'll of course be back with you tomorrow. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भारत, वंदे मातरम. Vande Mataram.